Good morning. Welcome to BioWorld. Today we'll start a new chapter, chapter 5, that is Morphology of Flowering Plants. Flowering plants, they are the most dominant plants on earth today. Approximately we can say that there are 3 lakh species of this group exist. It shows great variation in their size, their form, their structure. So let's discuss about size. So the plants may be very small or even very tall, just like that smallest angiosperm is rootless, aquatic, Wolffia globosa, right? You can simply say Wolffia, having 0.1 mm diameter. Then aquatic lamina has diameter 0.1 centimeter. Right? Okay. Then when we talk about tallest plant, so tallest plant is eucalyptus, which is 100-meter tall, right? And largest sized plant, which is banyan tree, and it is spread over 2 to 5 acres. एक ही प्लांट 2 to 5 acres में स्प्रेड हुआ है. ओके, चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट habit. Right? So habit, it is determined by height, ड्यूरेशन कितने टाइम पे सवार रहता है, एंड नेचर ऑफ स्टेम, स्टेम कैसा है, राइट? सो मेनली वी कैन से दैट प्लांट ऑफ 3 कैटेगरीज. हर्ब्स जो छोटे होते हैं, श्रब जिसको बुसिस प्लांट बोलते हैं. सो हर्ब्स मे बी श्रब or maybe trees, right? So maybe herb, shrub, trees, right? Mainly 3 types होते हैं. Okay. हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स में वीट, देन कैना, वो सब हर्ब्स हैं. वीट, कैना, राइट? श्रब जो थोड़े मीडियम साइज़ के होते हैं, इसका एग्जाम्पल है जास्मिन, रोज़. ट्री की बात करें तो पाइनस, देन बनियन ट्री, राइट? तो जिनका स्टेम थोड़ा थिक होता है, राइट? तो उसको बोलते हैं ट्रीज, राइट? ओके. नाउ that some plants
maybe creeper, right? That means they are having prostrate stem, पूरा ज़मीन पे फैला होता है, just like grass, right? Some may be tweener, जो वीक स्टेम प्लांट होते हैं, किसी के राउंड ऐसे किसी के ऐसे रैप होके पूरा ट्वीन होके होते हैं, चढ़ते हैं आगे. सम में बी क्लाइंबर्स, किसी का हेल्प करके ऊपर क्लाइंबिंग करते हैं. एंड सम आर एपीफाइट, सम आर एपीफाइट, जो किसी होस्ट पे सिर्फ रहते हैं, राइट? जस्ट लाइक ऑर्चिड, होस्ट में से कुछ गेन नहीं करते हैं. तो ये हो गया डिफरेंट हैबिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफ स्पान. Lifespan. So some plants may be annual, right? Annual means this plant complete their life cycle in a single season of a few weeks or few months, right? The example: wheat, maize, pea, gram, right? They are annual plants. While some are biennial plants. So in biennial plants, the plants live for 2 seasons, right? That will spread over more than 1 year. जो फर्स्ट सीजन होती है उसमें वो ग्रो होते हैं और फूड स्टोर करते हैं, और नेक्स्ट सीजन में वो फ्लावरिंग करते हैं, राइट? सो वी कैन से दैट फर्स्ट सीजन they grow vegetatively, and store food, and next season they produce flowering shoot, राइट? एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं रेडिश, कैरट, टर्निप, राइट? कोल्डर्स एरिया में है ये सब. एंड थर्ड, annual, biannual, and third one is perennials. So these plants live for a few years to several hundreds of years, right? ओके, ठीक है. तो ये फ्यू ईयर्स से सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव होते हैं. एंड उसमें भी जो यूजुअली विच बेयर फ्रूट्स एवरी ईयर, they are called as a polycarpic, right? Okay, so this is about lifespan.
Okay. Now let's discuss about habitat. Chalo, habitat. So habitat is a natural home. Habitat means it's natural home, right? So some are mostly terrestrial, some are aquatic, right? तो जो aquatic form है, it is called as a hydrophytes, right? Just like Zostera. So जो aquatic है उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट, जस्ट लाइक जोस्टेरा. और कुछ ऐसे होते हैं कि जो फ्रेश वाटर में देखने मिलते हैं, लाइक वुल्फिया, लेमना, पिस्टिया, ट्रापा मीन्स सिंगोड़ा, राइट. ओके. फिर मेसोफाइट प्लांट्स. मेसोफाइट मीन्स जो मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं उसको मेसोफाइट्स बोलते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट. ओके. फिर ज़ेरोफाइट्स. ज़ेरोफाइट्स प्लांट ऐसे है कि जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं तो उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स, राइट. अब ये जो ज़ेरोफाइट्स है उसमें छे कुछ सम स्टोर म्यूसिलेज एंड वाटर. वाटर और म्यूसिलेज को स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं सक्यूलेंट्स. लाइक आपको पता है ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल ओपुनशिया एंड यूफॉर्बिया. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्यूलेंट तो वो ज़ेरोफाइट ही है, बट दे स्टोर म्यूसिलेज एंड वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्यूलेंट, राइट. ओके. अच्छा, कुछ प्लांट्स होते हैं हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स मतलब कि वो कौन से एरिया में रहते हैं, सलाइन हैबिटेट, मतलब जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होता है वैसे, राइट. अच्छा, अब जो हेलोफाइट्स है उसमें से कुछ मार्शी हैबिटेट अलोंग सी शोर, मतलब कि जो समंदर है उसके किनारे और जहाँ कादो कीचड़ ज़्यादा होता है, राइट, वहाँ पे रहते हैं, राइट. और उसको बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, मैंग्रोव्स प्लांट. क्या बोलते हैं उसको, मैंग्रोव्स प्लांट. और उसका एग्जाम्पल है एविसीनिया एंड राइसोफोरा. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. इसका एग्जाम्पल मार्सी हैबिटेट में रहता है मैंग्रोव्स प्लांट, उसके एग्जाम्पल पूछते हैं एविसीनिया एंड राइसोफोरा, राइट. चलो, अब बात आती है न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन मोस्टली एज वी नो दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, डिपेंड्स, मतलब कि प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन, but some are heterotrophic also, just like cuscata and white cuscata, right. और वांदा, वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, डिपेंड्स ऑन अदर, मतलब कि पैरासाइट भी बोलते हैं उसको. ठीक है. ओके. पैरासाइट भी टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट. टोटल पैरासाइट में कस्कटा एंड पार्शियल पैरासाइट, उसमें विस्कम आएगा, एग्जाम्पल वो आएगा पीछे. ठीक है. और कुछ इंसेक्टिवेरस प्लांट्स भी होते हैं कि जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, वी नो दैट. ठीक है. चलो, अब आगे
चलो अब जो फ्लावरिंग पार्ट है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके जो पार्ट्स देखने जाए तो उसमें मेन प्लांट एक्सिस, उसमें रूट जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, फिर अबव ग्राउंड प्लांट पार्ट दैट इज नोन एज अ स्टेम, देन it possesses leaves, then flower, then fruit, and most important seed, right? रूट जो अंडरग्राउंड पार्ट है जिसमें से रूट हेयर अराइज होते हैं, और रूट हेयर का फंक्शन वी नो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट? रूट के लिए हम बोल सकते हैं कि दे आर पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, राइट? तो मतलब कि वो सॉइल की तरफ, नीचे ज़मीन की तरफ होता है, और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक बोल सकते हैं कि वाटर का वो साइड होता है नीचे की तरफ, राइट? सो रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो स्टेम के लिए ऐसा बोल सकते हैं दे आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बट नेगेटिव जियो एंड नेगेटिव हाइड्रो, क्योंकि स्टेम सनलाइट की डायरेक्शन में होता है, दैट्स वाई पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। लीव्स अराइज होते हैं फ्रॉम नोड, राइट? फ्लावरिंग एक्सिल में होते हैं या फिर एपिकल में, मैं समझाती हूँ। फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, राइट? अच्छा, सीड में याद रखना, कोई भी सीड हो, सीड में अगर उसमें एक कोटाइलेडन हो, राइट, तो उसको मोनोकोट बोलते हैं, मोनोकोटाइलेडन, और 2 कोटाइलेडन हो तो उसको बोलते हैं डाइकोट। तो सीड 2 टाइप के होते हैं, अगर 1 कोटाइलेडन है तो मोनोकोट, 2 कोटाइलेडन है तो डाइकोट। जैसे मीस मोनोकोट, और पी और बी बीन, तो वो डाइकोट होते हैं। अब कोई भी सीड हो, उसकी जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है उसमें 2 चीज़ होती है, एक रेडिकल और दूसरा प्लम्यूल, रेडिकल और प्लम्यूल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट रेडिकल, राइट? सो रेडिकल में से क्या अराइज होता है? रूट, राइट? एंड प्लम्यूल में से क्या अराइज होता है? शूट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रेडिकल में से रूट और प्लम्यूल में से शूट अराइज होता है, राइट? नाउ लेट्स सी द टिपिकल डायग्राम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो you can understand that above ground part, this is shoot system, so this is underground part, this is root system, this is shoot system, and whatever the brown is root system. So the top part, this is known as a apical bud. This is flower, right? This is leaf. From stem, from where the leaf arise, that is known as a node. Again, this is node. So the distance between 2 successive nodes,
distance between two successive nodes is known as a internode. What is called? Internode, right? That angle between stem, this is stem center, this is leaf. So angle between stem and leaf is known as a axil, and in axil what arise? Axillary bud. एक्सिल में क्या होता है? एक्सिलरी बड होता है. That is primary root. This is secondary root. And on surface of root there are minute hair-like particles whose main function is absorption of water and which increase surface area for absorption. They are known as a root hair. Right? So this is parts of flowering plant. ठीक है? और यहाँ पे ये हो जाएगा उसका रूट. ये क्या है? फ्रूट. So this is typical plant. Okay. So most important thing, remember that root arise from radicle and shoot arise from plumule. Okay. So this is typical plant.